This conference will now be recorded. Okay, so the range is 10% only. The upper circuit limit and the lower circuit limit is at 10%. I think this might have been probably because of the group it is listed in. Must have listed in some B group or something like that. Not sure. Okay, so the first bar is apparently seeming to be a very, very red bar. Huh. Let's just check if shorting is allowed for this particular script. Okay, shorting is also not allowed for this script on Zerodha. So we practically cannot really short this stock. Okay, first bar is seemingly a red bar. Red bar clearly does not mean any long setup in place for the time being. And apparently, I feel on listing, booking profits was a good idea. So, one of my friends, he had got allotment and I apparently booked profit at the listing at 90. That's why I was delaying the session by a bit. I was just busy in carrying some executions out. So booking profit on listing was a good idea, I feel, because the gray market premium was somewhere around 30, 35, right? And the listing played out around 32, which was somewhere in the middle of the gray market premium, right? So that was a decent listing, and booking profits was a fair enough idea. Guys, voice is audible. Can just confirm in the chat. Okay, that has come down to 83.55 now. Seems like going for lower circuit or something. Guys, यार जिनको voice audible नहीं है ना, just let me see once. Okay, what I'll do is I'll try to join from another device. I'll just join. I'll just try to join from my phone as well, and I'll tell you how you can really figure the voice thing out. Okay, so the it is trading at 84 now. The lower circuit is at 81 or something, I guess. 81 is the lower circuit and 80.50 on BSE. Okay. Okay. So what we'll do is we'll just plot two anchor VWAPs, right, as we generally do. What we do is after the listing, we plot two anchor VWAPs. One is from the 944, which is the settlement price, and one is from the first candle, right, which is this particular candle. So right now on charts, what I can see is that ये वाला जो anchor VWAP था, यहाँ पे इसको resistance face करना चाहिए था, right? One, two. This was the second red bar, and this was the particular, price below which it was trading, right? So seemingly this is the level of anchor we have as well. As you can see that 86.25 is coming to be the purple level, as you can see, right? So purple को मैं एक बार ये वाले को black भी कर देता हूँ. So you can see the purple and black level is aligning quite well. So that is showing that जो down move थी वो थोड़ी बहुत limit हो रही है अभी, right? जो डाउन साइड आ रही थी, जो मार्केट में सेलिंग आ रही थी फ्रॉम द लेवल ऑफ 90, it came down till 83. That selling is being a little bit absorbed, right? This is just a first line sign. So now what we have to really closely very very see is that ये जो तीसरी कैंडल थी, यहाँ से ये जो अभी हमको बाइंग मिली है, ये जो हमको दो कैंडल की बाइंग मिली है, यहाँ से ये जो बाइंग है ये नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट लेगी या नहीं, right? So right now what we have to very very closely observe is that between 86.15 to 86.35 zone, is it taking support or not? Okay, 86.15 to 86.45. Let's make it 45 because just one second. Because the AVWAPs they keep on fluctuating, right? As the price tends to move higher or lower. So that's why just to take a 10 paisa higher range. And now I feel it should be a good buy around 86.25 to 86 zone.
with a stop loss of 83. So let's say in case we are getting an entry here with a stop loss of 3 points, right? And my risk is going to be 1% for the day, so I'm going to divide it across. So let's say I'm planning to risk close to 10,000 bucks on this. So I'll be buying close to 3,500 shares. So I will place a buy order 3,500 shares at 86.50, 55. Let's keep it at 55 for now. Okay. So 3,500 shares at 86.55 is going to be my first order. 3,500 shares at 86.55. This is going to be my first buy order, right? My stop loss is going to be on 83.30, which is a day low. Let's see if that executes or not. And in any case, I'm not, really feeling comfortable to buy until and unless it is not testing the anchor viewer. So anywhere around 86.50 or 60 would also do. But in case if I'm not getting an entry, I would like to wait. But right now the trend is looking positive. Okay, just one thing to mention that right now the trend is looking positive. Okay, that looks like it is extending up well. Hmm. Okay. So right now it is coming around 86.70, something like that. So let's just wait. I feel यहाँ पे थोड़ा खरीदना. We can raise the price to 86.80. I'm planning to buy once it, just even touches the AVO app or even reaches some 5 or 10 paise close to it, right? And right here, it did come till 86.70, but I was having my order at 86.55. So just 15 paisa miss. Let's see. Let's just wait. We are not in a hurry, right? And FOMO तो कभी होना ही नहीं चाहिए. निकल जाए तो निकल जाए यार. नहीं मिले तो नहीं मिले. Not just one stock. Let's wait. Okay, so audio issues यार किसी को नहीं है, right? Audio issues किसी को नहीं है, I feel. Okay, let's see 8680 मिलता है नहीं. 8675 is the thing, so let's keep at 8685. Okay, 8685 we are in with 3,500 shares. So we have bought at 8685 and our stop loss is 8380. So let me just keep the stop loss really very quick. 83.25. Right, 30 is right. So let's just keep a little bit lower at 83 only, just to give a 30 paisa buffer. ओके सो लाइक आई सेड नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये ऊपर के लेवल से जो सेलिंग आई है, राइट, वो वाले दो एवी वैप हमने प्लॉट किए थे. वन वाज द पर्पल वन एंड द अदर वाज, लेट्स से दिस वन, लेट मी चेंज द कलर टू green, right? So we had plotted two AV waves. One was the purple one was the green one. And from the lower levels, which was at 10.02, 10:02 a.m. candle, from here, the buying that came, we plotted another AV wave from that level. Let's say that was the red one. Okay. So we have plotted three anchor VWAP so far, right? तो ये जो सेलिंग आ रही थी, जब तक प्राइस एंकर VWAP के नीचे रहेगा, प्राइस नेगेटिव ट्रेंड में रहेगा, प्राइस नेगेटिव फीलिंग में रहेगा, right? But as soon as the price went above the AVWAP on this particular candle, now the price will remain in an uptrend, and you can clearly see it retested and it is now taking the support at AVWAP, right? So this is what is happening, and once the price is taking support at AVWAP, the stop loss is going to be the low which it made below the AVWAP zone, in case you are planning an entry on any particular trade. So that is what it is. We have taken up at 86.85. ठीक है, चलो अभी एक सेकेंड रुको यार.
एक सेकेंड। ओके, हाँ, आई होप स्क्रीन दिख रहा हो सबको, है ना? कोई इशू नहीं है स्क्रीन में, ठीक है। तो ये वाले हाई के ऊपर वी गॉट टू रेड कैंडल फॉल as it is pretty evident. So we have another setup which is forming in here. One, from the price low of 83.30, the stock came high and went till 89, and then it came low till 86.55. That is where we planned our entry once on the retest of the anchor VWAP. And now, after getting two red candles fall on the closing, we are getting a breakout, a fresh breakout above the levels of 89. Okay, so Ishank is asking me the target here. The target here is going to be open-ended, right? I generally don't really plan any targets on the listing day. What I really feel like is that we should just ride the trend till it bends, right? But just in case if you feel like depicting a target here, what you can feel is that ये वाली जो मेरी range है ना, ये high से लेके low तक की, that was close to 7 points, right? तो अगर stock 91 के ऊपर जाता है, if the stock goes above 91, it can easily go up to 7 points, right? 91 plus 7 is going to be 98, so that is going to be the upper circuit level, right? So above 91, my target will be 98, right? Above 91, the target is 98. But for the time being, how the price action is playing out, I feel that what happened is that from this level of 83.30, the stock went till 89. 89 ke baad the stock came lower, and it came lower by only 2.5, right? Which is 2.5 points. So from the level of 89, I feel जब ये अब ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है, हमको क्लियरली दिख रहा है, तो 2.5 पॉइंट और ऊपर जा सकता है फ्रॉम 89 प्लस 2.5, दैट वुड बी 91.5 विल बी माय टारगेट नंबर वन, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट एंड दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड टारगेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग 91 इज हाई बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ये जो तीन हमने एंकर व्यू आप सुबह से ड्रॉ किए हैं, जब प्राइस नीचे आया तो प्राइस ने एंकर व्यू पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके एक नया हाई भी बनाया है विच इज अबव 89, सो प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई फॉर नाउ। थोड़ा चार्ट पे ड्राइंग ड्राइंग ज्यादा ही हो गया, कुछ डिलीट करते हैं थोड़ा। ओके, सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ये वाला हाई मारने के बाद मेरे को टू रेड कैंडल का फॉल मिला था, एंड वो रेड कैंडल के फॉल ने एंकर व्यू पे सपोर्ट लिया था, राइट? सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दिस एंकर व्यू जोन व्हिच वी हैव ड्रॉन, दिस शुड प्ले आउट टू बी अ गुड डायनेमिक सपोर्ट जोन। whenever price touches this anchor view zone, it should take support in this particular zone and it should eventually bounce back. अभी मैं right now इस current time पे जो मेरा stop loss 83.30 का था, I am not upping my stop loss to 86.55 right now, okay? Because that is just a two red candle fall, and occasionally, you know, when trading IPOs on the listing day, just give me a minute. Okay, so when trading IPOs on the listing day, I particularly like to wait for at least three red candle fall. ठीक है, just a matter of preference you can say, right? So for now this support is important, right? 86.55 support is important, but it will not hold as much importance as in case let's say यहाँ पे अब ये जो स्टॉक आ रहा है, यहाँ से ये बाउंस लेके अगर इसने नया ही बना दिया तो ये वाले सपोर्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। ओके, जस्ट दैट इज अ पॉइंटर व्हिच आई वांटेड टू शेयर। सो राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग एंड वाचिंग फॉर सम टाइम, ठीक है? लेट्स सी हाउ द पिक्चर प्लेज आउट। We are holding 3,500 shares, and I do want to up my quantity just in case it is giving me an entry somewhere around the levels of 87. Okay, so I'm just waiting and watching for the time being. Just give me 1 minute. Okay, just give me 1 minute, guys. I'll be back. ठीक है, एक second.
No. So, let's see. 87 something should give me a good entry. So what I'm doing is I'm adding close to 1,000 shares more at 87.35. Okay, so let's see if this anchor VWAP can play out as a good support or not. Now, right now, what happens is that this particular support which I was talking about, the do rectangle का falls which was at 86.55, right? People generally tend to keep stop loss at this particular level only because the price should never really go down below anchor VWAP. If it does, then it is giving me a sign of weakness, right? So what people generally do is they keep a stop loss at 86.55 only. I don't really like doing that because sometimes what happens is that price in buffer in volatility, the price goes below that level, right? It gives me a wick rejection and then it closes above that level, right? So just to give a bit amount of buffer and uh, bit on the, let's say, average two range side, जो भी हम एक indicator use करते हैं कभी कभी के लिए, तो 86.55 के नीचे I will never really keep the stop loss at 86.55 only. What I'll do is I'll keep the stop loss at the previous candle low, which is 85.30. So I will keep the stop loss at 85.30, this level somewhere around this, right? So right now what I'm doing is I am upping the quantity by some points, which is going to be, let me just up 500 more. Okay, so that is 5,000 shares now, right? And I'm going to keep the stop loss at 85.30, right? What is my average coming here? My average is coming at 86.97 of 5,000 shares. So I'm keeping the stop loss at 85 here. Okay, not, yeah, let's just keep it at 85. So I'm keeping the stop loss at 85 here, and the reason is very, very clear. Sometimes what happens is price comes below this particular support, right? And it gives me a wick rejection, and then it manages to close above that, right? Also, sometimes what happens is price comes below this level, it gives me a red candle closing, but then there is no follow-up selling on that particular stop. That is just a bit of from the experience side because I've been trading IPO since a very, very long time. So yeah, that is just what it is. So the stop loss is 85 now. ठीक है, ये स्टॉप लॉस का मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ. Okay, and the entry is 87, stop loss is 85. All right, my capital is 30 lakhs, quantity I have taken is 5,000, the risk is 10,000. Okay, so you can see very, very clearly here that जो मेरा risk है, that is just how much? The risk is just 0.33% of my capital. ठीक है, तो ये वाली चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है when we are trading. ठीक है, 86.30 आ गया है, तो वो वाला जो लो था उसके नीचे जा रहा है अभी, राइट? लेट्स सी इफ वी कैन गेट अ विक रिजेक्शन एंड दिस मैनेजेस टू होल्ड आउट और नॉट. ओके, किसका मैसेज आया है? मेरी आंख है या दिनेश, बोलो. ओके, सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज ये 89.80 के लेवल से हमको कांस्टेंट रेड कैंडल्स का सेलिंग का फ्लो मिला है टिल दिस पर्टिकुलर एंकर वीवैप एंड दिस सपोर्ट लेवल, राइट? नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की ऑब्जर्वेशन इज दैट अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और वो यहाँ से बाउंस ले रहा है, तो क्या वो ये वाले एंकर वीवैप पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे जा रहा है? नहीं, बिकॉज दैट विल बी अ नेगेटिव साइन इन दैट केस. लेट्स से प्राइस rises from this level, it comes up till 88.35 and it faces resistance here and then it goes down again, so that won't be really a good sign. So let's see how the price action will play out from the support zone, how high can it come and how it is going to move further. So for the timing, this is the trade. We have our entry at 87, we have our stop loss at 85,
Our first target is 91.5 and our second target is 98. So you can very clearly see the risk reward here. The capital deployed is close to 30 lakhs. The quantity is 5,000. So the risk is just 10,000 rupees, which is 0.33% of my capital. ठीक है, तो यार मेरे को 10,000 रुपए लॉस करने से कुछ नहीं होगा. But that 10,000 might be a big number for you. So in case you have a smaller capital, you should go with a smaller quantity, right? If you have a capital of 3 lakh rupees, you should buy just 500 shares. Just make sure you know the risk management very well when you are trading in any kind of script. कोई से भी script में कर रहे हो यार, सिर्फ IPOs की बात नहीं है. ठीक है, so this is the scenario for now. Okay, so that seems like what we exactly talked about. That you know, so how do you draw AV web? Dinesh is asking me. So यार AV web draw करने का बहुत simple तरीका है जो मैंने Google Drive link आपके साथ share किया ना. You just go and see that. You will understand that how do you use AV webs for particularly IPOs and in general also. You can see the past live trading sessions as well and you can interpret that well. तो अभी वो वाला part discuss नहीं करते. So what I exactly talked about was here that ये वाले support के नीचे कभी कभी price नीचे आता है और एक quick rejection दे जाता है. That is exactly what happened. That's why you should never keep the stop loss at the particular level only and just give it a bit of buffer. So now, like I said, जो second observation हमारे लिए बहुत important होने वाली है, that is going to be that अगर price ऊपर आ रहा है तो ये blue वाले anchor VWAP पे resistance face कर रहा है या नहीं, right? So we are just going to stay calm and we are going to observe how it is going to be. In case it gives a rejection from the blue AVWAP, or in case if it is facing resistance at this blue AVWAP, then it won't be a good sign because it will show that कि ये जो ऊपर से सेलिंग आई है इसमें थोड़ा दम था, right? That's why it came down till this level and it is facing resistance at this level, which means it will be a signal that our stop loss can get potentially triggered, right? So in that case, what we'll do is we'll just trim down our quantity by some, right? We'll just trim down our quantity by some in that case. Which indicator is used? Anchor VWAP. This one. It's not an indicator, it's a tool. What should be the new point of entry? Yeah, new point of entry मेरे को नहीं पता. I think I have entry at 87. So 87 is the ideal point of entry for now. I have already written on screen. Just in case if you cannot see, I will just increase the size.
So I honestly don't know which way the stock will play out, right? It can take out the stop loss also, and it can potentially move towards the target also. So my job as a trader is just to manage the risk, and that I have already done. My stop loss is at 85. That is kept. I have sized, uh, I have sized the position correctly, right? So the risk is just 0.33% of my total capital on the current active trade, right? And of course, like I said at the start of the session, that risk for the day is going to be 1%, right? So even if this hits stop loss, I will still have close to, how much is that? 0.67% left, right? So yeah, that is just how it is. Now I honestly don't know which way it will play out. It can play out to be any way, but currently looking at the current trend, right, the current trade and the current trend, I feel मेरे को लगता है ऊपर जाना चाहिए. I feel it should go up, but yeah, let's see. You never know. कप एंड हैंडल, ये थोड़ा अलग सा ही कप एंड हैंडल है, बट यार ठीक है. 1 minute पे कप एंड हैंडल आर नॉट सो एक्सपेक्टिव, बट स्टिल यू कैन से ये जो बना है एंड दिस, राइट, दिस यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट यार दिस माइट बी द कप एंड दिस माइट बी द हैंडल, आई गेस. तो यार मेरे को लगता है यार 85 होल्ड होना चाहिए एज पर द करंट प्राइस बिहेवियर. एंड अगर 85 नीचे की साइड पे आके ट्रिगर कर रहा है, देन दैट मींस दैट इज शोइंग अ पोटेंशियल वीकनेस इन द स्टॉक, एंड देन आई फील इट शुड डू द लोअर सर्किट in case 85 is breaking up, right? So that is just going to be how it is. For now, 85 is going to be the stop loss, and that is going to be the trade. Let's see ये blue वाले AVR पे एक बार resistance face करता है नहीं. अच्छा, तो अभी एक और important चीज मैं बताऊं कि let me just shift this a bit because what it is. Okay, so now what I was saying is that अगर ये blue वाले AVR पे resistance face करता है, राइट, देन व्हाट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इज कि ये जो नीचे वाले लेवल से बाइंग आई है ना, ये 86.30 का जो स्टॉक ने लो मारा था, यहाँ से जो स्टॉक यहाँ ब्लू वाले एवी वैप तक आया, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे वाले एवी वैप पे सपोर्ट ले रहा है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ये ब्लू वाला दूसरा एवी वैप, ठीक है? क्योंकि करेंटली व्हाट हैपेंड इज, ये ब्लू वाले एवी वैप पे क्या हुआ, यहाँ से जो स्टॉक इतना सा ऊपर गया, फिर स्टॉक जब वापस नीचे आया,
तो नीचे आके यहाँ के लेवल के नीचे इसने फॉलो अप मेरे को सेलिंग नहीं दी, राइट? एंड व्हेन आई डोंट हैव फॉलो अप सेलिंग बिलो दिस लेवल, दिस इज काइंड ऑफ एन इंडिकेशन दैट ये वाले जो पर्टिकुलर जोन है ये अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहा है, राइट? सो दैट इज जस्ट गोइंग टू बी हाउ इट इज। अभी मेरे को जो ओवरऑल प्राइस ट्रेंड देख के लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं 85 के स्टॉप लॉस से इंटैक्ट होल्ड करूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? I'll just hold with 85 stop loss intact for some time. ऊपर आया लेकिन ब्लू एवी वेब पे हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया, यू कैन सी अ रिजेक्शन पे, राइट? बट द टू ओवरलैप्स आर दैट ये जो नीचे वाले एवी वेब पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और जो ऊपर वाले एवी वेब पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, ये दो ओवरलैप दोनों एक चीज एक दूसरी स्टेटमेंट को क्रॉस आउट कर रही है, right? So that is why we are going to ignore that rejection for now and we are going to hold our trade with stop loss 85 intact, ठीक है? थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। वन स्टेटमेंट इज रूलिंग आउट द अदर। अब स्टेटमेंट क्या है कि ये जो ऊपर वाले लेवल से सेलिंग आई थी, इसके एवी वेब से यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस मिला है ना? और दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि ये जो नीचे वाले एवी वेब यहाँ तक सेलिंग आई थी, यहाँ से रिवर्स होके बाइंग आई थी, है ना? तो यहाँ से जो रिवर्स होके बाइंग आई थी, वहां पे जो ये वापस मेरे को रिटेस्ट मिला, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है? सो वन स्टेटमेंट इज कटिंग ऑफ द अदर वन, ओके? सो या आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन विद स्टॉप लॉस 85 क्योंकि मेरा रिस्क मैनेज है, मेरे को यार 10,000 लॉस से कुछ नहीं होगा, जस्ट 0.33% ऑफ माय कैपिटल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू होल्ड, वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। Should add again, yeah, 87 is a good level to add again, like I said, but 87.20 तक आया था अभी। Okay, so Vikash is saying he has sold half his position at 88.15. That's great, good call I would say, but I am just holding on. मेरे को यहाँ पे अभी रिस्क मैनेज करने की नीड फील नहीं हो रही बिकॉज द रिस्क इज 0.33% ऑफ माय कैपिटल, सो साइजिंग डाउन विल नॉट रियली मेक सेंस फॉर मी, राइट? आई थिंक आई जस्ट स्टे इंटैक्ट विद माय ट्रेड एंड ऑल्सो वन स्टेटमेंट इज क्रॉसिंग आउट अदर, सो yeah. Yeah, no voice because I am having breakfast right now. You know, whenever IPO list on the listing day when I'm trading, my breakfast always get delayed. So when I'm eating, I'm not talking. So I'm just holding on to my trade with 85 as I said, and yeah, I'll just wait. I'll just wait and watch. मेरा risk जो है यार वो managed है and 0.33% of my capital losing that much is not much of a big of a deal for me, right? And until and unless I'm not seeing a convincing
weakness or conviction or convicted negativeness building on the stock, I won't really like to take a call. I will just keep the stop loss 85 for some time. मेरा stop loss चला भी जाएगा, then at least I'll be convicted that ठीक है, now it is a sign of weakness, right? Okay, so 86 अभी आ चुका है. Okay, that does seem like a decisive breakdown below the anchor VWAPs though. If you say that ये जो मेरा लो बना था, right, उस लो के नीचे मेरे को यहाँ पे लो मिला था, right, and that is seeming to be a decisive breakdown. So what I'll do is, instead of waiting, I'll just take it out. Trying to get out at 86.40. Okay, 86.30 sold 3,500. 86.30 sold more. Okay, so I have exited entirely out. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिख रहा है. अब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या हुआ. एंकर वीवेप पे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था विक से, राइट. दूसरी बार यहाँ पे एक बार फिर से सपोर्ट लिया था, राइट. मैं एक बार हाईलाइट ही कर देता हूँ, बस मेरे को 1 मिनट दो. Okay, so when the price came, it took support at the VWAP. You can clearly see यहाँ पे विक टच करी और स्टॉक ऊपर मूव हुआ. दूसरी बार when the stock came, it took support at the VWAP. यहाँ पे विक टच हुई और स्टॉक वापस ऊपर अप मूव हुआ. Third time what happened is that stock स्टॉक डिड नॉट रियली टच दीज हेवी वैप्स. यहाँ पे भी यही हुआ कि एक हेवी वैप के नीचे मेरे को ब्रेकडाउन मिला और फिर वापस से एक ग्रीन कैंडल बनी, राइट. तो दिस वाज जस्ट अ फॉल्स ब्रेकडाउन और ये जो प्रीवियस स्विंग लो थे ये मेंटेन थे, राइट. देन व्हाट हैपेंड इज, तीसरी बार मेरे को ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल गई. ठीक है, ये वाली जो रेड कैंडल देखोगे इसमें बहुत स्ट्रेंथ है. अब बहुत स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि इसका जो ओपन है वो ऑलमोस्ट हाई के सेम है और जो लो है वो ऑलमोस्ट क्लोज के सेम है. ये वाली कैंडल को हम एक पर्टिकुलर चीज कहते हैं जिसको हम कहते हैं बियरिश मारुबुजू कैंडल. ठीक है, तो ये बियरिश मारुबुजू कैंडल मेरे को यहाँ पे मिल गई एंड दिस डिसाइसिवली क्लोज्ड बिलो द टू स्विंग लोज एज वेल. तो ये जो मेरे दो स्विंग लो थे इनके नीचे यहाँ पे भी क्लोज हो गई, राइट. तो यहाँ पे मेरे को जब ये साइन मिल गया और अब आप देख सकते हो कि ये वाली कैंडल के लो के नीचे भी मेरे को एक और कैंडल क्लोजिंग की मिल गई है जो है ये तीसरी कैंडल, राइट. दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, राइट. तो जब भी ये वीकनेस का साइन मिले यू शुड इमीडिएटली गेट आउट. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई डिड नॉट वेट फॉर माय स्टॉप लॉस ऑफ 85 टू गेट हिट एंड आई एग्जिटेड विद द लॉस ऑफ 3375 bucks. Okay, so that is just going to be for the first trade we took on electronic marts. ठीक है, चलो अब देखते हैं कि और कोई अपॉर्चुनिटी हमको पोटेंशियली मिल पाती है नहीं. ठीक है, एक चीज जो इस आईपीओ में मेरे को खराब लग रही है कि ये आईपीओ इन्होंने यार शॉर्टिंग के लिए एनेबल नहीं कर रखा जीरोधा ने. So Zerodha is not really allowed to short this IPO, so we cannot really plan any short setup on this. ठीक है, so this was the first trade that we took. Okay, ये देखो 85.20 के भी नीचे आ चुका है अब. That's why taking a decisive call at the right moment, being a trader, is very very important. You don't really have to give second thoughts. कभी भी ऐसा दूसरे माइंडसेट से मत सोचने लग जाएगा कि यार अभी एग्जिट कर लूँ क्या, 85 का वेट कर लूँ. जब भी आपको ऐसा कोई डिसाइसिव मूव दिख रहा है नीचे की तरफ कि हाँ यार ये तो पोटेंशियल साइन ऑफ वीकनेस है, और कभी भी अगर ऐसा कोई साइन दिखे तो इमीडिएटली जस्ट गेट आउट. Okay, so you can see now 85 is also approaching. So our call was good, I'll say. Okay, so now I shorted at 86.2 with stop loss of 88.10. That does seem like a good trade. 88.10 के stop loss से आपने short किया ना ये वाले पे, yeah, that is a good trade. But if your broker is allowing to short, then I feel ठीक है, अच्छा है. Okay, so 85 is also being taken out, guys. तो हमारा वो जो कॉल हमने लिया था कितने पे, 86.30 पे, that was a decisive call. You can very very evidently see. Okay, चलो यार ये वाली एक बार ड्राइंग्स को हटा देते हैं. That was just for explanation. I hope you understood the science why we did what we did.
ओके, सो अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने बोला था कि ये जो ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही थी, ये नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेके क्रॉस आउट कर रही थी स्टेटमेंट को, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो ऊपर के लेवल से सेलिंग आई है, दिस पर्टिकुलर लाइट ब्लू, लेट मी जस्ट कलर इट टू पर्पल समथिंग। तो ये जो पर्पल एवी वेब से सेलिंग आई थी, ये यहाँ पे इसने वापस सेकंड टाइम पे रेजिस्टेंस फेस किया था, जो हमारी स्टेटमेंट को इसने क्रॉस आउट कर दिया था यहाँ से, है ना? But still, this AVWAP is holding good resistance on the upside, right? Whenever the price is coming up, the purple AVWAP is facing good resistance. So now what can potentially happen is, meanwhile, as I'm speaking, 85 is also broken down. It is now trading at 84.75. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, आई फील दैट कभी भी स्टॉक नीचे आएगा और नीचे जाके अब जो ऊपर जाएगा ना, तो ये चार एवीवेप में रेजिस्टेंस फेस करेगा। दैट मींस दैट शॉर्टर्स शुड मेक मनी हियर टुडे, राइट? द शॉर्ट पोजीशन जिनकी है, उनका जो स्टॉप लॉस है वो 88.15, ये वाला जो लेवल है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि थोड़ा सा बफर आप लेके चलना। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग स्टॉप लॉस एट 88.15, यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस एट 88.50 एंड स्टे शॉर्ट ऑन इट, okay, in case you initiated shorts at 86.30. ठीक है? चलो, so I guess that is going to be it from today's live trading session. I think मेरे को ये अब ज्यादा ऊपर जाता लगेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि क्या होगा, अब ये पहले तो प्रीवियस लो विजिट करेगा 83.50 वाला, राइट? इट विल विजिट 83.50 वंस, एंड देन व्हाट विल हैपन इज 83.50 पे ये थोड़ा सा सपोर्ट लेगा और वहां से बाउंस आके ये एवी वेब्स तक आएगा एक बार, राइट? और अगर वो एवी वेब्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना वहां पे, तो दैट विल बी अ सिग्नल कि ये लोअर सर्किट की तरफ जाएगा, ठीक है? दो तीन चीजें हो सकती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यार अगर आप सबको बैठना है तो आप बैठ सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है in any kind of price movement, and I think sitting for so long also, it won't be easier for me. So what I'll do is I'll just wind up the session here, and I'll post any kind of updates or any potential chart buildups which are following through in the groups, ठीक है? मैं ग्रुप्स में डाल दूंगा जो भी चार्ट बिल्डअप हो रहे होंगे, एंड जैसे जैसे प्राइस एक्शन progress through hoga, I'll just keep posting and updating on the groups. Okay, so thank you once again for joining in. What I'll do is I'll share that Google Drive thing link once again in case you wish to learn technical analysis out after this session. Once again, thank you for uh, tuning in for today's session, and I hope you had a good learning experience. देखो, कभी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, कभी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है ना? So sometimes we learn as well as we earn, right? But for today, I feel it was a good learning session, and I hope you learned something new out of it. And yeah, have a good day.